Good morning, students. Today's topic is romantic imagination and national feeling. See, the development of nationalism did not come about only through the war or territorial expansion. We already seen that how French armies they carried the idea of nationalism abroad, and by this way they captured a large area of territory. Okay, so France was the first nation which got liberated by the nationalism. Okay, but we should understand that it is culture also which played very important role in creating the idea of nation. Here, culture means art, poetry, stories, music. These all help in expressing the feeling and shaping the opinion of the people. Okay, see many artists we already seen the first in the first part when we did the introduction there was a painting uh, which was created by Frederick Sariu. Okay, so in that painting we studied how he expressed the idea of nation. Okay, so in similar way the poetry stories were also used to spread the idea of nationalism. Okay, now let us look at romanticism. It was a cultural movement which was sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Okay, लोगों में नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था. ठीक है, so romantic artists and poets they generally criticize the glorification of science and reasons. जो आर्टिस्ट थे वो ये मानते थे कि हमें हर चीज़ के पीछे रीज़न या फिर उसका कारण नहीं देखना चाहिए. ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी फोकस बाय इमोशंस, बाय मिस्टिक फीलिंग, बाय इंट्यूशन. यानी जो हमारे अंदर की जो फीलिंग है उससे भी समझना ज़रूरी है. ओके, सो बाय दिस so it is their effort to create a sense of shared collective heritage. तो वो उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए जिससे जो लोग जिनका एक कलेक्टिव हेरिटेज था या कॉमन कल्चरल पास था वो किसी देश को बनने के पीछे का कारण बना. ओके, so it was their efforts and that the people who shared the collective heritage and also have the same cultural past became the basis of nation. Okay, now another romantics such as Johann and Gottfried वो ये मानते थे कि अगर हमें जो जर्मन कल्चर है उसके जो ट्रू सोल है जर्मन कल्चर की अगर हमें वो डिस्कवर करनी है सो वी हैव टू डिस्कवर इट फ्रॉम द कॉमन पीपल. ओके, एंड द ट्रू सोल ऑफ द नेशन कैन बी पॉपुलराइज बाय द फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्रीज, फोक डांस. ओके, यानी जो आम लोगों की जो गाने होते हैं या जो उनकी पोएट्रीज होते हैं या डांसेस होते हैं इसके थ्रू इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर जो किसी देश को बनाने के लिए ज़रूरी है. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, इसको कलेक्ट करें और इसको यूज़ करें नेशन बिल्डिंग के लिए. ओके, now revolutionaries and the liberals they also emphasizes on vernacular language and collection of folklore. वो क्यों vernacular language जो आम बोलचाल वाली भाषा है या फिर जो लोकल folklore है उस पर क्यों जोर दे रहे थे नेशनल स्पिरिट डेवलप करने के लिए.
इसके पीछे कारण ये था कि जो ज़्यादातर जो लार्ज मासेस थी या जो लार्ज ऑडियंस थी वो इलिटरेट थे. सो टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, it was necessary that common language should be used and the local folklore should be used, because people are already aware with them. So by use of this, the nationalist message can be, the modern nationalist message can be spread to a large audience. Okay, so here is example of Poland. Poland, actually, it was partitioned in the 18th century between the great powers like Russia, Prussia and Austria. Okay, so after this, Poland no longer existed as an independent territory. Okay, but the the Poland people, they kept their nationalist feeling alive through their music and language. Now, for example, Karol Kuczynski, he celebrate the national struggle through his opera and music. अपने ओपरा और म्यूजिक के थ्रू उन्होंने क्या किया, जो अपना नेशनल स्ट्रगल था उसको जारी रखा. इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो फोक डांसर्स थे लाइक पोलोनाइज एंड मुजुका, उसको एक नेशनलिस्ट सिंबल की तरह यूज़ किया अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ दीज powers, okay, which made this independent territories as their colony. Okay, so in this topic we have seen that how culture played very important role in developing the nationalist feeling.